Hello everyone, good evening again and welcome back to BYJU'S exam prep. How are you guys today? आपको लग रहा होगा why is ma'am having hot coffee in such a hot weather? The weather here is not hot anymore. How are you guys doing today? So we have a very important topic to take up today, most commonly asked CR questions. And we'll be discussing those questions. हम देखेंगे क्या क्या टाइप के questions आते हैं critical reasoning में, जिसको logical reasoning का नाम दिया है CLAT ने, और एक sample question solve करेंगे master करने के लिए उन types of questions को. So you can take this class as an intro class, जो आपको बताएगा कि critical reasoning में किस किस टाइप के questions आ सकते हैं. That's what the agenda of the session is going to be. पार्ट वन में आज जो पार्ट वन है मैं आपको एक इंट्रो दूंगी क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिर ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम पिकअप करके आगे लेके जाएंगे और हम एक एक टाइप ऑफ क्वेश्चन पिकअप करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसको मास्टर करेंगे. दैट्स व्हाट द एजेंडा ऑफ द सेशन टुडे इज गोइंग टू बी. सो आई होप एवरीवन कैन हियर एंड सी मी क्लियरली. स्टार्ट करते हैं आज के एजेंडा के साथ. एजेंडा क्या है? We discuss the most common types of CR questions that come up in the examination in CLAT. अब CLAT देखिए critical reasoning नाम से एक section नहीं देता. CLAT में logical reasoning नाम से एक section आता है, which is a misnomer of course, because उस section में आता सिर्फ critical reasoning है. So क्योंकि critical reasoning के questions ही आते हैं, हम उसको LR बोले, CR बोले, it's one and the same thing. और क्योंकि पूरे section में सिर्फ critical reasoning आता है, तो क्रिटिकल रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पूछा जाता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में. Let's start off with that. Let's kickstart our session. Let's discuss the most common types of CR questions that come up in CLAT and AILET. But before I proceed, there's a free counseling one-to-one counseling session that we are providing to you. The link to that free one-to-one counseling session is under my video in the description box. उस लिंक पे क्लिक कीजिए और हमारे काउंसलर्स से बात कीजिए. वो आपको बेसिक डिटेल्स फॉर्म में पूछा जाएगा, आप बेसिक डिटेल्स फिल कीजिए और हमारे काउंसलर्स आपको कॉल करेंगे एंड दे विल हेल्प यू आउट विद द डाउट्स दैट यू हैव. Alternatively, आप एक फ्री सब्सक्रिप्शन भी अवेल कर सकते हैं 3 days के लिए. फ्रॉम द डे यू स्पीक टू आवर काउंसलर्स, वो आपको एक फ्री एनरोलमेंट देंगे एंड फॉर द नेक्स्ट 3 days you can access everything for free, as our classes and our batches, everything you can see what we have to offer. So जल्दी से रजिस्टर कीजिए with our batches and see what we have to offer to you. So start करते हैं most common CR questions के साथ. एक बार एक पैराग्राफ देती हूँ. Go through the paragraph because the moment I explain the types of questions to you, आपके लिए लिंक करना बहुत आसान होगा इस पैराग्राफ के साथ. Skim through the paragraph, पढ़िए इसको और समझिए पैराग्राफ क्या बोलना चाह रहा है. Ideal conditions. Hi Adriel. Okay, this is the quintessential critical reasoning paragraph. It shows you how a critical reasoning paragraph may look like and what it predominantly focuses on. A critical reasoning paragraph will essentially have an argument given by the author.
And almost every question that stems out of that critical reasoning paragraph or passage will depend upon the argument given to you. Were you able to identify the argument in this paragraph? Yes or no? Hi, Queen. Were you able to identify the argument in this paragraph? Yes. आर्ग्यूमेंट क्या होता है? ऑथर का ओपिनियन, स्लाइट लूजली अगर आप फ्रेज करें तो, दैट ऑथर किस चीज में बिलीव करता है, ऑथर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो ही वांट्स टू पुट अक्रॉस, जिसके बारे में वो पूरे पैराग्राफ में बात करेगा. लाइन नंबर 1 इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर कि आजकल इकोनॉमिक्स एक्चुअली रियलिटी पे कम डिपेंड करता है और ज्यादा फोकस करता है सूडो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज बनाने में, जो कि रियलिटी से दूर है क्योंकि उनके लिए सूडो वर्ड यूज किया गया है. सो ऑथर ने क्लेम कर दिया कि इकोनॉमिक्स रियलिटी से दूर है, सूडो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ज्यादा बनाता है. अग्रीड. उसी को एक्सप्लेन करने के लिए रिमेनिंग पैराग्राफ लिखा गया है. ये एक टिपिकल क्रिटिकल रीजनिंग पैराग्राफ है जिससे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस लेके आते हैं. क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वर्बल लॉजिक एंड क्रिटिकल रीजनिंग. वर्बल लॉजिक क्वेश्चंस यूजुअली वन लाइनर स्टेटमेंट से दिए जाते हैं, जैसे सिलोजिज्म्स है या लॉजिकल कंसिस्टेंसी है. बट लॉजिकल कंसिस्टेंसी क्रिटिकल रीजनिंग पैराग्राफ बेस से भी हो सकता है. द डिफरेंस बिटवीन अ वर्बल लॉजिक एंड अ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन इज वर्बल लॉजिक आपको यूजुअली वन स्टेटमेंट के थ्रू आता है एंड क्रिटिकल रीजनिंग आपको एटलीस्ट 1 से 2 से 3 पैराग्राफ्स का लंबा पैसेज के थ्रू आता है, बट मिनिमम 1 पैराग्राफ जरूर होगा क्रिटिकल रीजनिंग में. एसेंशियली क्लैट में आपको 3 पैराग्राफ लॉन्ग एक पैसेज दिया जाता है, 300 से 400 वर्ड्स का लेंथ होता है और उसमें आपके क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं. वर्बल लॉजिक क्लैट में आया नहीं है पिछले 5-6 सालों में, बट AILET में वर्बल लॉजिक ऑन एंड ऑफ आता रहता है, जाता रहता है. सो द चांसेस ऑफ वर्बल लॉजिक कमिंग बैक इन AILET इज स्टिल एक्सपोनेंशियली हाई. ओके, now let's talk about the common types of questions जो कि verbal logic और critical reasoning दोनों sections को belong करते हैं. But before I proceed, did you hit the like button? If you haven't done that yet, please do that right now, and please hit the subscribe button so that you don't miss out on any of our videos anymore. ठीक है, तो सबसे पहला होता है क्वेश्चन समरी और मेन पॉइंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आपके मैक्सिमम क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस इन्हीं से स्टेम आउट करते हैं. आर्ग्यूमेंट ढूंढना, आर्ग्यूमेंट क्या है, उसी को समरी बेस्ड क्वेश्चन बना सकता है, उसी को मेन पॉइंट क्वेश्चन बना सकता है, उसी को आर्ग्यूमेंट ऑफ द ऑथर बनाया जा सकता है. ओके, तो वहां आपसे पूछा जाता है आर्ग्यूमेंट क्या है ऑथर का. दूसरा क्वेश्चन है स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट. स्ट्रेंथनिंग द आर्ग्यूमेंट क्या होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करेगा और बहुत फोर्सफुली सपोर्ट करेगा, आपको वो ऑप्शन ढूंढना है. ऑन द कॉन्ट्ररी, एक वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट का भी क्वेश्चन हो सकता है. व्हाट इज द वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन? आपसे एक ऐसा ऑप्शन ढूंढने को पूछा जाएगा जो कि गिवन क्वेश्चन को काउंटर करेगा, गिवन आर्ग्यूमेंट को काउंटर करेगा, उसको अपोज करेगा. बोलेगा नहीं, ये आर्ग्यूमेंट गलत है, ये आर्ग्यूमेंट गलत है क्योंकि जो भी रीजन दिया होगा वो वीकन करेगा आपके क्वेश्चन को. सो आर्ग्यूमेंट ढूंढना और उसको स्ट्रेंथनिंग और वीकन करना, ये सबसे कॉमनली देखे जाने वाले क्वेश्चंस हैं. एनी क्वेश्चंस हियर एनीवन? सिलोजिज्म्स फ्लैट में तो नहीं आता, नो अनुष्का, लास्ट बहुत 5 सालों में नहीं आया. बट इफ यू लुक एट AILET 2 years बैक, लास्ट ईयर भी आया था, लास्ट ईयर नहीं आया, बट उसके पिछले साल बहुत सारा आया था. सो सिलोजिज्म्स एक बहुत ही इजी टॉपिक है. यू शुड बी पिकिंग इट अप, यू शुड बी डूइंग इट thoroughly. We'll be doing a bit of that in my app session today at 5 p.m. So don't miss out on that. Okay. Next kind of critical reasoning question is finding the flaw in the argument. कुछ गड़बड़ होगा आर्ग्यूमेंट में, कुछ वियर्ड होगा, कुछ ऑडिटी होगी. आपको ढूंढना ऑडिटी क्या है, क्यों है वो. इसी को रिजॉल्व करने के लिए भी बोला जा सकता है आपसे. एक ऑडिटी होगी और आपको बोला जाएगा ये ऑडिटी क्यों एग्जिस्ट करती है. That is resolving the paradox.
सो क्वेश्चन में कुछ वियर्ड होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये फिर भी हो रहा है, क्यों हो रहा है? रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स। और कुछ गड़बड़ हो रहा है, दैट इज फाइंडिंग द फ्लॉ। तो फ्लॉ ढूंढना और उसी को रिजॉल्व करना, दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। फिर आता है पैरेलल लॉजिक। पैरेलल लॉजिक होता है क्वेश्चन में एक पैटर्न ऑफ रीजनिंग दिया हुआ होगा, आपको सेम पैटर्न ऑफ रीजनिंग विद अनदर वर्ड्स ढूंढना है करेक्ट ऑप्शन में। सिमिलर ऑप्शंस मिलेंगे आपको, आपको उसको एलिमिनेट करना आना चाहिए, बस आपको मिमिक करना है रीजनिंग का पैटर्न जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, उसी को ही ऑप्शंस के थ्रू। ठीक है, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना होगा आपको, ये भी क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन है। और लॉजिकल कंप्लीशन के आगे आर्ग्यूमेंट कैसे क्लोज किया जा सकता है, दैट्स योर लॉजिकल कंप्लीशन क्वेश्चन। टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली क्रिटिकल रीजनिंग में आते हैं, एंड दे आर assumptions and conclusion based questions। आपसे पूछा जाएगा assumption निकालने के लिए पूरे पैराग्राफ में से या कंक्लूजन निकालने के लिए पूरे पैराग्राफ में से, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, सो दिस इज एन ओवरव्यू of what are the different types of critical reasoning questions that come up. I'll be picking up each of these independently in the furthermore classes that come up and we'll be solving them in detail. अब एक बार वापस हमारे गिवन क्वेश्चन पे जाते हैं। मैंने आपको ये पैराग्राफ दिया था, इस पे एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपको, और क्वेश्चन है आपका आर्ग्यूमेंट ढूंढना है। ठीक है, एक बार जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लो, फिर आपको ऑप्शंस पे लेके जाऊंगी मैं। जल्दी से पढ़ के सेंड मी अ डन। Okay, what's the correct answer here? Very easy. It is. You've got the correct answer. It is a D. As we had discussed while we were reading the paragraph, what was the claim of the author? The author had claimed कि जो economics है वो और जो practice करी जाती है, it's pretty far from what happens in reality. It instead focuses on pseudo mathematical formulas. Pseudo क्योंकि वो reality में applicable ही नहीं है. It's far away from reality. और उसी को explain करते हुए the remaining paragraph was written. That's exactly what option D says. The mathematical equations used by economists do not accurately describe the real world. They're far away from that. Option C says the physical sciences are wrong to emphasize the mathematical formula. गलत है, सही है, opinion है, but claim क्या है कि reality से दूर है वो. Theoretical clarity is undesirable in economics. It may be, but reality के पास होना चाहिए. That's the claim. So ये भी गलत हो गया. And economics ought to be more like physical sciences. Physical sciences के जैसा होना चाहिए नहीं पता नहीं, but reality के पास होना चाहिए is what the claim of the author is. Thus D is the correct answer, undoubtedly. And that brings us towards the end of our class. There's a free one-to-one counseling session link under my video in the description box. If you wish to get counseled by your expert team of counselors, click on the link, fill out your basic details, and one expert member from my team is going to give you a call and help you out with the doubts that you have. You can also avail a free 3-day subscription on our app after you speak to our counselors. So do that right now. Fill out the basic details and speak to our counselors right away. I hope you had a fun learning session with me. Please subscribe to the channel and hit the like button, and don't leave without that. If you have any questions, you can comment under my video as well. That's going to be all for today. See you at 5 in the app. Have a very, very good day. God bless you.